Hello, all the students. Welcome once again. 5 more questions based on vocab, and my name is Anil Chaudhary. The very first question which you see on the screen, this becomes a question based on match the following. Possibly, first instance, जब student देखेंगे तो उन्हें लगेगा plagiarism, BCs, expurgate and abdicate. Possibly इनमें से बहुत सारे words के meanings हमको नहीं भी पता होंगे. And considering that, many times students see that this pattern is very tough, not easy. But do understand, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सभी वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं भी पता होंगे तो भी चलेगा. हमें सिर्फ एक या दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं. एंड देन स्टूडेंट्स यू विल सी द ऑप्शंस आर गोइंग टू हेल्प अस. और ये जो मैच द फॉलोइंग का पैटर्न है, इट इज वेरी कॉमन इन CUET, इन द पेपर्स ऑफ सिम्बायोसिस, इन द पेपर्स ऑफ NMIMS. तो आई बिलीव दैट किसी भी UG या PG एडमिशन टेस्ट में इनका जो इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज्यादा है. तो दैट इज द रीजन वो क्या डायरेक्टली पूछा जाए या ना पूछा जाए. If you know the meanings of the words, that is going to give you a lot of confidence in understanding English as well. तो इस पूरी सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना. इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं, watch them and you will see vocab is going to become stronger now. So students, do subscribe the channel and keep sharing with your friends as well. Okay, coming on the very first question, I want you people to give the correct answer, pause it, think about which is the right answer. Now, this question is not so tough. See, the very first word, abdicate. I guess in the last class also we had a question where this word was there. So when I say abdicate, what does it mean? Abdicate basically stands for to give up or to renounce. To give up or to renounce. So students, if I take all the four options, to give up a throne or utter office of dignity, so that is the meaning of abdicate, to give up. Understand? So students, A4, this combination. Have a look over the options. Coincidentally, there is only one option which has got the combination of the N4. So here, students, first option becomes the correct answer. Okay? Do understand? The first option becomes the correct answer, A4. Okay? So indeed, अब बाकी words के meanings नहीं भी पता है तो भी चलेगा. But anyway, don't waste time in the exams now. But ठीक है, हमें यहाँ पर सीखना है, so that is the reason we are going to discuss this question further. Now, what is the meaning of BCs? I guess you people understand what is the meaning of Cs. जैसे for example, जब पुलिस को पता चलता है कि इस particular area में there are some criminals, so what the police does, it actually seizes that area. तो स्टूडेंट्स, BCs का मतलब है किसी एरिया को ब्लॉक कर देना, किसी एरिया को सराउंड कर देना, so that we can nab the criminals. So here, students, BCs, the correct answer is to surround. Plagiarism. Now, what is the meaning of plagiarism? Plagiarism का मतलब होता है piracy. Literary theft becomes the correct answer. The simplest word for plagiarism is piracy, or we can use theft also. Theft. Students understand. जैसे मान कर चलें किसी की कोई किताब, अब किसी ऑथर ने बहुत अच्छी मेहनत करके एक किताब लिखी, कोई और उस किताब को चुरा ले और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दे. दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ पायरेसी. हम भी स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, देखिए हम भी कई सारी ऑथर्स के बुक्स में से वी डोंट हैव द बुक्स, तो हम क्या करते हैं, वी गो टू अ फोटोकॉपी वाला, वी टेल देम कि यार इसके 5-10 पेजेस की फोटोकॉपी कर दे. विदाउट परमिशन व्हेन वी डू दिस, इवन दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ प्लेजियरिज्म. कई सारी बॉलीवुड मूवीज, कई सारी हॉलीवुड मूवीज आपको स्टूडेंट्स फ्री में उनका जो कॉपीड वर्जन है, जो पीपल गेट ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दिस इज अनऑथराइज्ड एंड दिस इज व्हाट plagiarism is all about. Okay, then students, coming on expurgate. So when I say expurgate, to remove offensive portion of a book, इसका बेसिक मतलब होता है to remove, to cut, to destroy. That is the point. So here first option becomes the correct answer. Well, coming on students, acha, before we take the next question, you people very well know that IIM Careers, it is for all the UG admission tests. So CUET, IPMAT, Christ University, Symbiosis, NMIMS, जो भी करना हो. And then students, we have the ASCAT channel, okay, where you people can join us for CAT, for all the PG admission tests. So do understand, एक है iconcareers.com and the second is iconascat.com. So please ensure that दोनों websites को visit करो and get in touch with us if you want to join us online, offline, any mode.
चलिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग. Now this time, this becomes the question which is not purely based on vocab, but this becomes the question where you people have to find out which particular verb is going to fit in which particular sentence. Even these kind of questions are commonly seen in various exams. So please ensure that you people very well know कि मुझे कौन सा word कहाँ पर fit करना है. Yes, come on. They dash that I go with them. They proposed, they insisted, anything is possible. They demanded, okay, chalo check karte hain. The doctor dash that I rest for 2 days. Now students do understand. The doctor demanded nahi ho sakta, the doctor insisted is also not correct. And doctor never proposes. Doctor recommends. He prescribes. The students, the doctor recommended. So I think B1, this combination is correct. अब B1 का कॉम्बिनेशन कितने ऑप्शंस में है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन. दैट्स इट. एंड स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर. अब A3 का कॉम्बिनेशन, दे इंसिस्टेड दैट आई गो विद देम, नो प्रॉब्लम. C4, द चेयरपर्सन प्रपोज दैट प्लान्स बी चेंज्ड, ओके. एंड D2, द लैंडलॉर्ड डिमांडेड दैट आई पे द रेंट बाय ट्यूसडे लेटेस्ट. तो लैंडलॉर्ड क्या करता है? डिमांड करता है कि भाई रेंट इस ट्यूसडे तक पे कर ही देना. तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो हिंट है, रिकमेंडेड एंड डिमांडेड. बाकी दोनों वर्ड्स प्रपोज्ड एंड इंसिस्टेड वो फिर भी स्टूडेंट्स हम इधर उधर कर सकते हैं. तो एनीवे, बी केयरफुल अबाउट. और एक कॉम्बिनेशन भी अगर सेट हो गया, आई थिंक स्टूडेंट्स गेटिंग द आंसर बिकम्स ईजियर. देयरफॉर क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ढंग से पढ़ना है एंड ट्राई टू गिव द आंसर. चलिए, coming on students. Now there are 4 sentences given to us and there are 4 words. You people have to find out कि कौन सा word कहाँ पर fit होगा. And moreover, you people should know the meanings of these words as well. I guess chef का meaning सभी को पता है. आपके chef, a professional cook, जो किसी particular cuisine में बड़ा expert होता है, understand. Entrepreneur, that becomes a general word which means someone who takes a risk, someone who starts a new business. So entrepreneur is a person who undertakes risk. Then chronicler. Chronicler का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट डज इट मीन? इसका बेसिक मतलब होता है हु राइट्स. तो इसके कॉलम्स आते हैं. ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस ही और शी कीप्स राइटिंग हिज और हर एक्सपीरियंस. तो इसको अपन कहते हैं chronicler. And then students, repertoire. So repertoire is a collection. Repertoire is a collection of some skills, some experience, some knowledge, whatever. So that is the meaning of repertoire. तो अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ इन चारों में से which is the correct answer. हालांकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा बेनिफिट वहां से भी मिल जाए. तो मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया. आई वांट यू पीपल कि मुझे एक एक वर्ड के बारे में पता चले. Ika Jina is an Odia food dash who documents and showcases Odia cuisine on her blog Culinary Express. Now see students, the biggest hint, who documents and showcases. So the correct answer is third option. Okay. Geetika Saikia identifies herself as an Assamese food who specializes in tribal and mainland Assamese cuisines. So students, I think यहाँ पर अगर अपन शेफ ले लें तो चलेगा, पॉसिबल है. आपके who specializes in. तो शेफ का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कुक. किसी पर्टिकुलर क्विजीन में उसका स्पेशलाइजेशन होता है. कमिंग ऑन द थर्ड वन, हिमाचल प्रदेश हैज अ रिच, आई कैन नॉट से एंटरप्रेन्योर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेड्स. आपके कलेक्शन ऑफ. एंटरप्रेन्योर इज नॉट सुटेबल हियर. तो हियर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, रिपर्टोयर. एंड दीपा चौहान आपके इज a Bangalore based culinary entrepreneur. So absolutely. So this becomes the correct answer. I guess the point is clear. All the students do understand. Chef, entrepreneur, chronicler and repertoire. So this becomes the correct answer. तो किसी भी एंगल से आप देखोगे ये क्वेश्चन टफ नहीं है. बट यस, दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी आल्सो बिकॉज देयर वर सम वर्ड्स जो मल्टीपल लोकेशंस पर फिट हो सकते हैं. बट वी विल हैव टू बी केयरफुल. एंटरप्रेन्योर कौन होगा? अ पर्टिकुलर पर्सन. अब हिमाचल प्रदेश हैज अ रिच, तो वहां पर तो एंटरप्रेन्योर आएगा नहीं, अंडरस्टैंड. एंड गीतिका साइकिया आइडेंटिफाइज हरसेल्फ as an Assamese food
ऑन्टरप्रीनियर अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो स्टूडेंट ये गलत होगा बिकॉज शेफ इज सुटेबल हियर एंड मोर ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो अपने आप को आसामीज फूड का क्या मानती है, एक बहुत एक्सपर्ट शेफ मानती है. तो दैट इज द रीजन द करेक्ट आंसर इज दिस. चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, यस IIMCUET.com जरूर विजिट करो. For CAT 2026-27 the courses are available. चलिए coming on students, question number 4. Now this becomes a very direct question where a word is given to us and 4 options and we are supposed to find out the closest in meaning. Casual. So what is the meaning of casual? Casual का मतलब होता है students flattery करना. Understand? Casual is to flatter. Casual is to flatter. You understand? Butter up karna. Okay. So students, when I say casual, it is to try to persuade others, to try to please others. That is the meaning of casual. And the best synonym here is coax. So here students, the correct answer is coax. So casual का जो best synonym है, that is coax. The casual is to flatter. One more synonym can be fawn. One more synonym can be psychophancy. So when I say psychophancy, that also means flattery. Psychophant is a person जो flattery करता है, जो चापलूसी करता है. Okay. One more synonym can be taken as obsequious. Obsequious. Okay. Even this person is always too lenient. He always tries to please others. This man is so meek. जैसा सामने वाला बोलेगा, मैं करने को तैयार. बस. The focus is very clear. I have to please that person. Whatever he says, I am ready. So that is what flattery is all about. So casual is that. Coax. Chaliye, what is the meaning of complacent? Complacent का मतलब होता है satisfied होना. So when a person is satisfied with himself, with whatever he has achieved, I see that so many students, when they have stopped the learning, it seems like these people have become complacent in their lives. तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब है सेटिस्फाइड हो जाना. तो यहाँ पर एम्बिशंस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कॉम्प्लेसेंट. ओके. चलिए कमिंग ऑन वर्ैसिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ैसिटी? डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वर्ैसिटी, और इफ आई से हु कैन बी कॉल्ड एज voracious? Okay, and do understand there is a difference between voracious and voracious. Voracious किसको कहते हैं? अच्छा, कुछ और आपने देखा होगा कभी वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन. So what happens in verification? So we actually try to find out what is the truth. So verify, verification, document verification. So the purpose is to find out the truth. I think students, अगर मैं उससे relate करता हूँ तो veracity stands for what? So veracity, the correct answer is third option, truthfulness. So one synonym can be rectitude. So veracity can also be called as rectitude. Okay, one option can be integrity, one option can be uprightness. Okay, in सब का मतलब more or less one and the same. One more option can be propriety. Propriety. Even this becomes one of the answers. चलिए, so thank you so much for being with us. I think 5 questions are done. Absolutely. तो स्टूडेंट्स, कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताओ एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.